Hello, Namaskar, and welcome to the another great episode of Gist Junkies. Moving ahead, I would like to call the guest of our today's show, Ms.P. Shivani Singh Ma'am, who is the head curator IP Curate Lab and head of leadership and development at JECRC. Welcome, ma'am. Thank you. Now, first of all, ma'am, I would like to ask you about your past experiences in JU and in your particular field. Yeah, thank you so much, Shaurya, for asking this question to me. And JECRC University is always being, it's always a first love for me. And I'm associated with this university since its inception. And since then, I got an opportunity to play different kinds of roles from admission counseling to teaching, and now as the university is growing and so as my role is, and that's why we created this this different kind of cell at the university, which is called learning and development cell, which is generally being heard at corporates. Learning and development, but this is the first university where we are having an organized learning and development cell, which is not for the student. This cell is for the teachers, how to upgrade teachers so that they can produce better student. Right. So this is how we came up with this learning time at JECRC University. We learn a lot, and we try to specifically myself try to answer a lot of questions. So a lot of questions related to how we can grow as an institution and how we can actually mark a presence at the international podiums. So this is how I would say my experience at JECRC University. This helped me a lot to grow, and also it helped me a lot to understand what is important for a student, of course, which everybody talks, and what is important for a teacher, which still needs to be done. That's great to hear. Now, आप सभी ने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इन सभी शब्दों को बहुत बार सुना होगा और यूज़ भी किया होगा, पर क्या इन सब का मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं तो हम उसी बारे में आज बात करने वाले हैं. And so is our topic for today, that is intellectual property rights at university level. Now we'll be starting with the questions, ma'am. My first question to you is, what is actually meant by intellectual property in simple words? See, when we talk about the intellectual property, and if I would like to simplify it in Hindi, so this is intellectual is bodhic, and property, of course, everybody knows that this is something which you own. So this intellectual property, ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जो बौद्धिक रूप से आपकी है, जो कि विचारिक तौर पे आपकी है और जिस पे आपका हक है. So this intellectual property talks about everything which an individual creates, right, intellectually. It could be your thought, it could be your lyrics, it could be a story, it could be an innovative idea. आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया. और जनरली आप बड़े फर्म्स के बारे में जब इन्फ्रिंजमेंट की कोई आप कहानी सुनते हैं तो पता चलता है कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी का आइडिया चुरा लिया, तो अब उसके ऊपर एक केस या मानहानि का दावा लगाया जाता है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे आपकी प्रॉपर्टी के आसपास एक अपनी, अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें, हम घर से या हम मकान दुकान से जनरली हम प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे घर मकान दुकान के लिए आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं सो दैट ट्रेस पासर्स कैन नॉट एंटर और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहे. सेम जब हम बात करते हैं बौद्धिक प्रॉपर्टी की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो उसमें कैसे बॉर्डर्स लगाई जाए, उसके लिए तो कोई पैमाना है नहीं. सो इसलिए हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम इंडिया में अब बात करने लगे हैं. पिछले 7-8 सालों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत काम हुआ है कि किस तरीके से हम अपने विचारों को अपनी ही कंट्री में रख सकें और उससे जो ग्रोथ को हम देख पाते हैं इन फ्यूचर, वो हम अपनी ही कंट्री में उस ग्रोथ को कैसे basically we can protect our property and we learn about that. Intellectual property. Yes. So you cannot store it now. You cannot put it in the bank. So that's the reason we are talking about intellectual property today. Okay. Very well answered, ma'am.
My next question to you is, why is it important to protect the intellectual property? सी जब आप बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो हम उसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Because it's your own, of course. Because it's your own, because this is something which you want to keep it with you forever, because you care, Yeah. right? Because you want this property to be passed on to the next generation of your family, right? Same happens when we talk about the intellectual property. The protection to this property is even more important than the property we create with mortar and bricks, you know? So this property requires this protection because these are the ideas and the creativity which actually converts into multi-millennial businesses, you know. And you might have seen or you might have heard about शौर्य कि अब बहुत सारे जो फॉरेन के आपने एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं. तो आपको क्या लगता है उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं थी इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया? नो, नॉट रियली. हाँ, नॉट रियली. ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं थी. उन्हें एक सही समय पे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उनके आइडियाज़ थे उनको किस तरीके से वो आगे जॉब क्रिएशन या हम कह सकते हैं किस तरीके से वो मनी क्रिएशन में उन आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी की मिल गई थी. जी बोलिए. या मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what are the perks of being aware about the intellectual property rights? What are the perks? So when we are talking about perks, as I just mentioned in my earlier reply, this is the key towards success. Right? If you see all the if you take it as an example, there are a lot of automotive companies, there are automobile companies who keeps innovating their cars, who keeps, if you talk about Tesla, if you talk about all the new things, EVs and all. Yeah. See, it is really easy to copy, right? But if it is protected, if you know the right, if you know कि एक पेटेंट एक आइडिया है, उस आइडिया को आपको सिर्फ ip.gov.in, राइट, जो कि एक IP प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपको वहाँ जाकर के उसे रजिस्टर करना है. उसकी एक फी है जो आपको पे करनी है और उसके बाद वो आइडिया आपका है. जैसे अभी आप अपने JECRC यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी हमारे टीचर्स ने तकरीबन 35 पेटेंट्स पब्लिश किए हैं पिछले 8 महीनों में. Right? That's a really big number. Yes, or these 35 patents are about mainly how we can have sustainable living. Right? तो आप सोचिए जब ये 35 आइडियाज़ बाज़ार में क्रिएट होंगे, जब इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होंगे, so it will be really helpful for the nation to conserve environment as well. Yeah, because sustainability is the need for our. Yes. इसी की तो ज़रूरत है. So even if I would like to take a few example from the previous experience of these patents which we created in last 7-8 months. So like we created one of the box, for you might have seen the cake boxes, right? This is the simplest thing. Which you never even keep after taking the cake out of it. Yeah. It is not having value to keep it on the table. हम उसे फेंक देते हैं साइड में पहले, right? So उसका यूज़ कैसे? उसके ऊपर एक जिलेटिन लगा हुआ होता है which is non degradable प्लास्टिक होता है. ठीक है, हमने क्या किया है, उसको डिग्रेडेबल मटेरियल से क्रिएट किया है, हमारी फैकल्टीज ने यहाँ पर, और उसी में कटलरीज भी लगा दी हैं, विच इज़ पॉप आउट कटलरीज. सो आपको उसमें प्लास्टिक के जो आप फोक्स एंड नाइफ्स एंड यूज़ करते हैं तो आप उसे अवॉइड करेंगे, राइट? वो पूरा का पूरा बॉक्स यूजेबल है, ठीक है. एंड दिस इज हाउ वन इज एंड अनदर इज लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट दी एक और इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पेटेंट हमारे सामने है हमारी फैकल्टी का JECRC यूनिवर्सिटी से, नंबर प्लेट्स, राइट? कार्स में नंबर प्लेट्स होती है, उनका क्या रोल होता है? उनका रोल होता है कि उसकी एक आइडेंटिटी है, उस कार की आइडेंटिटी है वो नंबर प्लेट. पर हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली गाड़ियाँ चोरी भी बहुत होती हैं, राइट? और जैसे ही वो आइडेंटिटी उसके सामने से हटी, वो बेनाम कार है, बिल्कुल, राइट? कोई उसे पहचान नहीं सकता. And ma'am, my next question to you is,
why intellectual property and rights are important for the students to know at the university level? You know, when we are talking about university or an institution, especially an education institution, we are sitting on the mines of ideas, right? This is the place which generates n number of ideas every minute. Every minute. It starts from how to have more fun in the class, right? So the creativity starts from there and ends at the various interviews. Even it ends with the various ends at the various corporates where the student gets placement. Like you might have heard about, we had more than 2,000 placements in the previous year. Right. So ये सारी creativity. What do you think? Why these companies are taking these students? Because they found them creative, and this creativity started from the classroom, right? Or वही कि how to have more fun. Maybe how to bunk a class, right? Or maybe how to fool a teacher, right? So this is at a lighter side, but this creativity is not bounded, right? So जब हम universities की बात करते हैं तो हमें institution level पे, school level पे, university level पे इस IP के बारे में बच्चों को aware करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So we started in the university by creating this IP curate cell. हमने सबसे पहले teachers को इसके बारे में strongly aware कर दिया. We are having like more than 200 teachers are trained now in this IP creation, right? So जब 200 teachers trained हैं तो वो 200 teachers जब class लेने जाएंगे and it will be one teacher multiplied by 60 students every time. Yeah. Right? So understand how they will amplify the effect of this IP awareness in the university, and these 60 students are going to they're going to make it even larger. So when we are talking about this, why it is important to protect this IP culture at universities, because every student who is joining this university is coming up with great ideas. I would like to quote here about one of the example, right? A faculty of hotel management department at university at JU, they created one ladle, right, which counts the kind of calories one is being served per spoon. Right. So it is very important for the patients who are in the hospitals and for the health freaks, right, who really would like to have a count on each and every calorie. So JECRC University में जो IP curate lab हमने यहाँ पर establish करी है, उसके through हम यही awareness students and teachers में create कर रहे हैं how they can protect their idea. This is just an idea. You just come to us, आप आइए हमारे पास, बात करिए कि एक idea है और उस idea को हम कैसे protect कर सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, right? And fortunately we are really lucky कि इसका 100% जो financials हैं, जो commercials हैं, वो university management bear कर रहा है, ठीक है? 100% financial bearing is on the university management. So मतलब जब आपके पास में रिसर्च है, आपके पास टीचर्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पूरे राज्य के आसपास के राज्यों के सबसे बेहतर स्टूडेंट्स हम अपनी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, तो जब आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे हैं, रिसर्च का प्लेटफॉर्म है, तो हम ऐसे आइडियाज़ कितने सालों से हम सिर्फ पब्लिश करते जा रहे थे न्यूज़पेपर्स में और हम अपने आइडियाज़ को ऐसे ही बेच दे रहे थे, शायद या बेच नहीं रहे थे, हम अपने आइडियाज़ को ऐसे खुलेआम बता रहे थे, राइट? सो अब क्या है कि अब उन आइडियाज़ की कमर्शियल वैल्यू हो गई है क्योंकि अब वो प्रोटेक्टेड, राइट? सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी, दिस इज़ दी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. और ये हमें कब पता चला कि हमें ऐसा करना स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट कर देना चाहिए, जब हमने JIC के साथ, इंक्यूबेशन सेंटर के साथ काम किया, जब हम अलग अलग पिचेस सुनते हैं उनकी, दे कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज़, राइट? दे कम अप विद वेरी वेरी क्रिएटिव आइडियाज़ एंड वो सारे आइडियाज़ किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर हो जाते हैं विदाउट प्रोटेक्शन. और कई बार तो उन लोगों को ग्रांट्स मिलती हैं या नहीं मिलती है, लेकिन उनका आइडिया तब तक चोरी हो चुका है, ये श्योर है.
सो क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के पिक्चर्स को ज्वाइन करते हैं और वो आइडिया कब कहाँ कैसे आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो आइडिया चोरी हो गया। सो हम जब आईपी की बात करते हैं ना, तो हम एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, वंस योर आइडिया इज पब्लिक इट इज पैरिश्ड। राइट। सो अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो गया, आपने जैसे ही बोल दिया finished. Right. So it is really important before you publicize your ideas. It is advised. Let's protect those ideas. See, our student goes for various internships, various jobs, right? Various interviews. So अभी तक उनके CVs में होता है we have done these many internships, these many practicals or these many activities we have done. Imagine when they will start writing, I have 3 patents in this particular field, and imagine the kind of weightage it will create on that resume and the person's creativity. So the idea is let's talk about more creativity and innovation at the institution level. So इसलिए ये IP की awareness, intellectual property की awareness IP curate के थ्रू और इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने यहाँ पर ली है। अभी तक हमने इस 2022 जून तक है मुझसे हम अभी तक टीचर्स के साथ हम ये प्रोटेक्शन जो हम आईपी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर डूइंग विद टीचर्स आइडिया। 2022 वी आर ओपनिंग दिस सेल फॉर द स्टूडेंट्स एंड दिस इज, आई नो दिस इज गोइंग टू बी द वंडरफुल year for me because here at JECRC University students are full of ideas and full of creativity. I don't know अब ये जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं क्या हमने इसके कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट किए हैं या नहीं. We need to talk to the organizers, right? Because this is one of the wonderful platform and they can actually earn, they can actually create this copyright for this particular name, this particular platform, and it will be always it will remain with them forever, right? And even if somebody else will want to use this platform, so they have to give royalty to them, right? So ऐसे creativity इतनी हर डिपार्टमेंट में हर दिन हमारे यूनिवर्सिटी में जनरेट होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें और इसकी प्रोटेक्शन की बात स्टूडेंट्स तक लेकर के. Okay. So this is how this entire process goes on. Okay. With this, I end my questions here, ma'am. Thank you so much for taking out time for being with us. It was really an honor hosting you. सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ. Till then, stay tuned. Thank you.